Hello students, we will continue our previous topic indefinite integration. Today we are going to see the second method of indefinite integration, that is integration by parts. Okay, to evaluate the integration by using this method, integration by parts, we have to use this formula. This formula is known as product rule of integration. क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स. नाउ हियर two different functions are in product form. So here u is the first function, v is the second function. But to evaluate the integral, we have to decide the function. Which function is u and which function is v. How we can decide the functions? So by using this letter L, I, A, T, E. Light A or light? This is the word. Keep it in mind. L, I, A, T, E. L stands for logarithmic function. Logarithmic function. I stands for inverse trigonometric function. I stands for inverse trigonometric function. A stands for algebraic function. Algebraic function. T stands for trigonometric function. And E stands for exponential function. First of all, we have to identify the functions. Which are the two different functions? Functions are among these: L, I, A, T, logarithmic, inverse, algebraic, trigonometric and exponential. तो जो फंक्शन फर्स्ट आएगा, the function which comes first, that function is u. तो फर्स्ट फंक्शन u क्या होगा? प्रोडक्ट में जो पहले आएगा, पहले यानी इस वर्ड में फर्स्ट आएगा, दैट फंक्शन इज u एंड रिमेनिंग इज v. इजंट इट? u का डेरिवेटिव निकलता है, v का इंटीग्रेशन निकलता है. दैट इज वेरी इजीली. नाउ सी एक्सरसाइज 3.3. इवैल्यूएट द इंटीग्रल. इवैल्यूएट फर्स्ट वन. Integration x square log x, x square into log x dx. Now here are the two different functions which are in product form. So first of all, you have to identify the function. X square, which is the function? X square is algebraic. X square is algebraic. Log x is logarithmic function. तो सबसे पहले कौन सा आता है? लेटर में एल आई टी में फर्स्ट आएगा लॉगरिथमिक. तो u क्या होगा? जो फंक्शन पहले आता है वो u होगा log x और v होगा x स्क्वायर. इजंट इट? बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल. क्या है प्रोडक्ट रूल? इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx minus integration of integration v dx into du by dx into dx. This is the product rule of integration. At the first step आपको क्या करना है? Substitute the values. What is u? u equal to log x. What is v? v equal to x square. First step में आपको सिर्फ values put करना है. Integral I becomes u. u means log x. Integration v means x square dx minus integration of integration, again v means x square dx. du by dx means d by dx of u. Derivative of u, what is u? Log x
bracket complete into dx. This is the product rule of integration. Okay, is equal to log x into, what is the integration x square? X raised to n, integration x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Here n equal to 2. So integration x square is x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. That is x raised to 3 upon 3. Minus integration, इसका इंटीग्रेशन लीजिए. अगेन सेम इंटीग्रेशन x स्क्वायर इज x क्यूब अपॉन 3 into derivative of log x. Derivative of log x is 1 upon x into dx. Now simplify this. X cube upon 3 log x माइनस एक x कट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा 1/3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx. Now take the integration x square. Integration x square is x raised to 3 upon 3. So it is x raised to 3 upon 3 log x minus 1/3 into x raised to 3 upon 3 plus c. C is the constant of integration. Now we can take x cube upon 3 common, x cube upon 9 common. So it becomes 3 log x minus 1 प्लस सी. ओके, हमने क्या कॉमन लिया है? एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉमन. यहाँ पे आएगा 3 log x minus 1 plus c. c is the constant of integration. Isn't it? Okay, now we'll take the next one. याद रखिए सीक्वेंस लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल. इस लेटर में यही डिसाइड करते हैं विच फंक्शन इज यू. पहले जो आएगा इस लेटर में दैट फंक्शन इज यू एंड रिमेनिंग इज बी. दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पे यूज किया है. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. इवैल्यूएट द सेकेंड इंटीग्रल. इंटीग्रेशन x into tan inverse x dx. सेकेंड इंटीग्रेशन x into tan inverse x dx. अभी इस लेटर में पहले कौन सा आएगा? ये लेटर आपको यूज करना है LIATE. L stands for logarithmic, I stands for inverse trigonometric function, A stands for algebraic, T stands for trigonometric function, E stands for exponential function. Now here in the second sum, identify the two different functions. These two different functions are in product form. First function is x, second function is tan inverse x. So what is x? X is algebraic. Algebraic कहाँ पर है? थर्ड नंबर पे. Second is tan inverse x. Tan inverse x is the inverse trigonometric function. तो इस वर्ड में सबसे पहले कौन सा आता है? I. So what is u? Here u is equal to tan inverse x and v is equal to x. Okay, by using integration uv dx is equal to u integration v dx minus integration of integration v dx into du by dx into dx. ओके, फंक्शन हमने डिसाइड किया इस वर्ड से LIATE, लाइटे या लिएट, वट एवर में भी. सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. क्या पुट करना है आपको? u की जगह पे tan इनवर्स x और v की जगह पर x ऑन राइट हैंड साइड. सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू, सबसे पहले है u. u मीन्स tan इनवर्स x. इंटीग्रेशन v का वैल्यू है x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v का वैल्यू है x dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u है tan इनवर्स x इंटू डी एक्स. u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन.
So this becomes tan inverse x integration x. X means x raised to 1. X raised to 1 का integration x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1. That is x square upon 2 minus inside integration, outside integration as it is, integration x is x square upon 2 into derivative of tan inverse x. What is the derivative of tan inverse x? That is 1 upon 1 plus x square dx. Okay, now this can be written as x square by 2 tan inverse x minus this 1 by 2 x square upon 1 plus x square. Here we have to take the adjustment, x square plus 1 minus 1 upon 1 plus x square dx. Plus 1 add भी किया और subtract भी किया. Adding 1 and subtracting 1. Okay, 1 by 2 outside. Now here take the separate integration. So this becomes x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2. Take the separate integration, x square plus 1 upon 1 plus x square dx minus half into minus 1. So that is plus half integration 1 upon 1 plus x square dx. I is equal to x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2. 1 plus x square plus 1 same. So that is 1. What is the integration 1 dx? 1 dx का integration है x plus half integration 1 upon 1 plus x square. Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Therefore, integration 1 upon 1 plus x square is tan inverse x plus c. Now you can take half common throughout. So it is x square tan inverse x minus x plus tan inverse x plus c. That is the required answer. Isn't it? Okay, now we will take one more sum. That is the third one by using this one on product rule of integration. Okay, next one is x square sine 3x. X square sine 3x dx. Okay, x square is algebraic and sine 3x is trigonometric. इस वर्ड में पहले कौन सा आता है? algebraic, बाद में आता है trigonometric. तो u क्या होगा? u इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू sin 3x. Now integrate by parts. अभी रूल आप डायरेक्टली यूज कीजिए. I is equal to u integration v. What is u? X square integration v sin 3x dx minus integration of integration v is sin 3x dx into derivative of u, that is x square, into dx. U integration v minus integration of integration v into derivative of u dx is equal to x square. What is the integration sin 3x? Sin 3x का integration minus cos 3x upon 3. So cos 3x upon minus 3 minus integration sin 3x का integration minus cos 3x upon 3. So it is cos 3x upon minus 3. X square x का derivative 2x into dx. So this can be written as minus x square upon 3 into cos 3x
minus minus plus 2 upon 3 integration x into cos 3x dx. Now here again two different functions are in product form. Again integrate by parts. Here u is equal to x and v equal to cos 3x. Again integrate by parts. Integrate by parts again. Integrate by parts again for this integral. So I is equal to minus x square upon 3 into cos 3x प्लस 2 अपॉन 3. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है. व्हाट इज u? x इंटीग्रेशन v cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v इज cos 3x dx, सॉरी cos 3x dx. यहाँ पे cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u आएगा x ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डी एक्स. यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट होगा u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डी एक्स. दिस इज x. ओके, I इज इक्वल टू minus x square upon 3 cos 3x multiply by 2 by 3 x cos 3x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x upon 3 minus this 2 by 3 इंटीग्रेशन cos 3x अंदर का इंटीग्रेशन cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स. ओके, अभी सिर्फ इसका इंटीग्रेशन लेना बाकी है. द लास्ट टर्म ओके, I इज इक्वल टू minus x cube upon 3 cos 3x plus 2 upon 3x sin 3x. 3 into 3 9, so this becomes 9. 2 by 9x into sin 3x minus 3 into 3 9 minus 2 upon 9 sin 3x dx. Now last integration is pending. What is the integration sin 3x? Sin 3x का integration है minus cos 3x upon 3. So this becomes minus, sorry, here is x square, minus x square upon 3 cos 3x plus 2 upon 9 x sin 3x minus 2 upon 9. Integration sin 3x is minus cos 3x upon 3 plus c. C is the constant of integration. So it becomes minus x square upon 3 cos 3x plus 2 upon 9 x sin 3x minus into minus is plus 2 by 27 cos 3x plus c. Now LCM 3 9 27 का LCM आएगा 27. So I is equal to, we can take 1 by 27 outside. Here is 3, so multiply by 9 minus 9x square cos 3x. Here is 9, 9 3s are 27, 3 into 2 6x sin 3x, and here is remaining plus 2 cos 3x plus c, which is the required answer. Isn't it? Do you understand? Okay, now the next sum we will take in the
next video. See you.